you. Wishing you all a very happy new year. Thank you, Thank you ma'am. so Thank much. you, ma'am. So, have you made some resolutions for the new year? Mm, not No, yet. not yet. Okay. So, how much more time you need? एक्चुअली मैम डेली रेजोल्यूशन होते हैं डेली सक्सेस और फेलियर होते हैं Okay, okay. Okay, so I had given you some assignments. Many of you have not submitted till now. So, if you keep on working on your assignments, it will be beneficial for you because that will help you prepare for the exam as well, right? यस मैम Yeah. So, we had discussed about philosophy and ethics in our previous classes, and today we are going to discuss a very important topic, that is scientific conduct. So, before moving on, I just want you to share your views about what you think is the difference between science and arts. Yes? आई थिंक साइंस इज दैट जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद रिजल्ट हमारे पास आता है कंक्लूजन आता है Okay, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स and right. art we can say we can make our drawings posters and other arts like music and other things. Okay, anyone else would like to chip in? What is the difference between science and arts? Science deals with facts, journal truths, experiments, evaluations, research, and art deals with creative things. Arts deals with creative things. Anyone else would like to add something? So, as we have listened to the views that science, they say that it is something which is based on facts, something based on logic, and arts is something creative. So, basically, if we see the difference, we can say that science is something which we do systematically. Like, for example, if you are doing an experiment, there are certain steps which have to be followed, and anything which is scientific, that can be observed by the others also. Like, for example, in science, if I say that every action has equal and opposite reaction, which was said by Newton, that can be observed by anyone. So basically it is objective, कि whosoever observes it will get the same result. And arts क्या है, उसमें थोड़ी subjectivity आ जाती है. It is a bit of subjective and it can vary from person to person. Now, while doing research, it is very essential that we have the scientific conduct. So scientific conduct क्या हो गया, अगर हम definitions देखें कि whatever we are doing in our doctorate studies or whatever you are writing in your PhD thesis, that should follow certain steps, that should have certain solid basis. You cannot write anything just because you feel like writing it. Whatever you write should be justifiable, and it can be mandated by the others also. तो ठीक है, साइंस और जो आर्ट्स है उसमें ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं कि जो साइंस है दैट इज बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स. ठीक है, साइंस में जो भी हम चीज कहते हैं दैट कैन बी वेरीफाइड, एंड आर्ट्स में थोड़ी सब्जेक्टिविटी आ जाती है. सो साइंटिफिक conduct, if we see the definition, as you can see, it refers to ethical, honest क्यों है, because if we give false results, that will not be observed by others and it would no longer be scientific. And responsible behavior in all stages of research, planning, conducting. So these are the stages which you will also follow. First you will plan, you will conduct, you will analyze, and after analyzing you will report to ensure trustworthy and reliable knowledge. So what is reliability? Anyone? What is reliability? Yes.
Am I audible? Yes, madam. Yes, ma'am. अच्छा अच्छा. Okay, okay. So reliability, you have heard the word reliability. Reliability means consistency in results. For example, I tell you a story, right? कि I had gone to a jungle and I saw a lion over there and I killed it single-handedly. This story I tell you 6 months back. Again, after 3 months, you meet me and I tell you the same story ki yes, I went to the jungle, I met a lion and I killed it alone. You meet me again 2 months later and I tell you the same story. So what is that? That is रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, मतलब कि एक ही रिजल्ट्स, ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ रिलायबिलिटी की कि कंसिस्टेंसी है. बट मेरी जो स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ दैट मे नॉट बी वैलिड. वैलिड मीन्स ट्रूथफुलनेस. माई स्टोरी माइट बी अ सेट ऑफ लाइज. मैं आपको झूठ ही सुना रही हूँ कि मैंने जंगल में शेर को मारा है, पर वो रिलायबल क्यों है? क्योंकि मैं जब भी आपको मिलती हूँ, कंसिस्टेंसी है मेरे चीजों में. आई एम नॉट चेंजिंग माई वर्जन. दैट इज रिलायबिलिटी. और वैलिडिटी क्या है? ट्रूथफुलनेस. तो जो साइंस है उसमें क्या है, आपकी वैलिडिटी भी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस एंड रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी इन योर results. So whenever you are doing your PhD, when you plan your thesis, when you are conducting research, when you are analyzing your results, when you are reporting, उसमें validity और reliability अगर होगी तो आपकी जो research है वो जो है trustworthy होगी. So for one example is shared here. A researcher reports unexpected negative results honestly instead of hiding them to support a preferred hypothesis. So, what is hypothesis? We had discussed earlier also. What is hypothesis? Yes, Assumptions. assumptions, right? Or a tentative solution. So, in PhD, what you are going to do, first of all, you are going to write your statement or your problem of research ki I am going to work in this area. Then you will write down the tentative solutions कि ये मेरी problem है. For example, if I say emotional intelligence of to find the emotional intelligence of students of 12th class, तो मेरा एक hypothesis या tentative assumption ये हो सकता है कि for example girls have higher emotional intelligence than boys. Hypothesis means कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है. अगर तो मेरे रिजल्ट्स इसको सपोर्ट करेंगे, आई विल एक्सेप्ट द hypothesis. But if my results get otherwise, my hypothesis will be rejected. So what is scientific conduct? Scientific conduct is that even if you get unexpected negative result कि आप कुछ और मानकर चल रहे हो, आपका hypothesis कुछ और है, but आपके जो results हैं वो contradictory आ रहे हैं, you will still accept them and try to give the reason why you have got those results instead of hiding them, right? So this is scientific conduct. Then the next is why scientific conduct matters, right? So why scientific conduct matters? What is at stake? So what is at stake? Credibility of science, public trust, career and reputation and societal impact. अगर आप scientific conduct, you are not following scientific conduct, these are all the things that will be matter. Credibility of science. This I will give you an example. It will come earlier also. There was a vaccine named as Wakefield vaccine, और ये measles के लिए बच्चों के लिए बनाई गई, right, for measles and mumps. So what happened, some of the scientists they conducted a study और उन्होंने एक रिपोर्ट बना दी कि जो भी whoever has given these vaccine to the kids their stomach got infected because of this, right? So they had altered the numbers, given the wrong result. उसकी वजह से क्या हुआ कि this vaccine was withdrawn for some time. इसको withdraw कर लिया गया और as a result क्या हुआ कि उस year
आई थिंक ये यूएस की स्टडी है. उस ईयर यूएस में बहुत सारे जो बच्चे हैं दे वर अफेक्टेड बाय मीजल्स एंड मम्स. सो व्हाट इज एट स्टेक? द क्रेडिबिलिटी ऑफ साइंस. कि अगर आप गलत रिजल्ट्स दोगे, गलत पेपर्स लिखोगे, रिजल्ट्स को वेरी करोगे, तो क्रेडिबिलिटी ऑफ साइंस विल बी questionable. Public trust, as I just gave you an example. Then the career and reputation, even your career or the institution where you are working, and it will of course have a effect on the society. So one example, a falsified medical study leads to unsafe treatment guidelines. कि अगर मैं सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या अपनी रिसर्च को दिखाने के लिए if I manipulate the results, it will lead to unsafe treatment guidelines, right? So this is just for discussion. We will do it after we have finished. Then next is the research integrity oblique scientific integrity. So if you are sticking to the ethical principles, then your research will be honest, accurate, transparent, and reproducible. For example, sharing raw data and analysis course for replication. Sharing raw data. Now, if I am doing authentic work and if somebody asks me that you share your results, I will share my results because I have done good work, right? And analysis code means that I will also tell what method I have used for conducting this results. So these four things should be there. So first of all, we will take up intellectual honesty. So intellectual honesty means commitment to truth, seeking and objectivity. So I had told you the difference between objectivity and subjectivity. Can anyone repeat it? I think in my previous lectures I had discussed with you. Anyone? Yes. What is the difference between the two? Objective observation and subjective observation. Objective observation means which depends on the scientific measurements. Yes, and That subjective? to the subjective means just guess like ideas. Okay. Thank you, Darshan. So, objective and subjective, beta, I had given you all an example also. Ki for example, agar ek question paper hai, right? So, in that we have objective and subjective. You can keep this example in your mind, it will be very clear. So, when we are having, say, fill ups or right and wrong answers, either you will get 1 mark or you will get a zero, right? Either the answer will be right or the answer will be wrong. So if teacher A has checked the paper and given you say 6 out of 10, teacher B will also give you 6 out of 10. And if these both teachers check the paper after a fortnight or say after 2 months also, you will get 6 out of 10. So that is objectivity. The same evaluation by different persons after a span of time also. But when we write a subjective answer, for example, we have short type questions or essay type questions, you will get different marks by different teachers. For example, if I give you 7 out of 10, right? Another teacher may say ki I don't give marks to handwriting or I don't cut marks for grammar. He might give you 8 out of 10, right? Another one may give you 5 out of 10. And even if I check the paper, for example, I'm checking your paper in the morning, I'm in a very relaxed mood and I give you 7 out of 10 कि मुझे इसके नंबर कहीं नहीं काटने हैं. But after 10 days, if I am checking the same answer और मेरी अभी किसी के साथ लड़ाई होकर हटी है, I might give you 6 for the same answer. So that is subjectivity, that the results may vary not only from person to person, but the same person may also evaluate the same thing in a
different way. So intellectual honesty means that there will be objectivity in your work, means even if you are evaluating it after some time or some other person is evaluating, आपके जो results हैं वो सेम होंगे. नो मिस इंटरप्रिटेशन. चेरी पिकिंग मीन्स जो अच्छी अच्छी चीजें आपको लगती हैं उनको आप उठा के अपने थीसिस में डाल दो, एंड the things which you don't like or you think they are contradicting your study, you remove them. So honesty means you do not misinterpret your data. Or selective citation. Citation means when you are writing your thesis. आपकी लग गई है क्लास उसकी स्टेप्स की? Did you have a class for that? How to go forward with a research proposal? Yes? No, ma'am. अच्छा, ठीक है. तो वो आपको स्टेप्स बताएंगे. तो citation means whatever I am writing, like there is a chapter which is known as review of literature. So what we do in review of literature is that whatever study has been done already related to our studies, we give those citation कि मेरे से पहले इस पर्सन ने इस स्टडी पे ये काम किया, उसके ये रिजल्ट्स आए. तो सिलेक्टिव साइटेशन क्या है कि जो रिजल्ट्स मुझे लग रहा है कि मेरी स्टडी से कॉन्ट्राडिक्टरी है, आई डोंट टेक दोज रिजल्ट्स, बट आई टेक ओनली दोज रिजल्ट्स जो लग रहा है मेरे लिए सही है. सो दैट इज नॉट ऑनेस्टी. तो ऑनेस्टी क्या है? वट एवर लिटरेचर यू फाइंड रिलेटेड टू योर स्टडी, you quote that only, right? So for example, citing studies that contradict your hypothesis. आपका चाहे hypothesis contradict हो रहा है, but you will even give those studies कि ये studies मेरी स्टडी के ऑपोजिट रिजल्ट है, बट स्टिल आई एम गिविंग द साइटेशन. सो कॉमन पीएचडी पिटफॉल. कॉमनली हम पीएचडी में क्या गलतियां करते हैं? इग्नोरिंग कंफ्लिक्टिंग लिटरेचर टू स्ट्रेंथन योर आर्ग्यूमेंट. कि मुझे लगता है कि मेरी जो स्टडीज हैं ये स्टडी उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो आई शुड गो अवे विद इट, बट दैट इज wrong. You should give both type of studies in your PhD thesis. Then we come to research ethics. So research ethics में क्या आता है? Moral framework guiding research involving humans, animals, society and environment. तो ethics भी क्या है कि ये नहीं है कि I want to conduct a study on students. So I don't tell the students why I am conducting this study, or I don't tell them that your identity will not be shared. These things should not be there. So not only for humans but for animals as well, like in pharmacy, or in, for example, when I was doing MSc zoology, we used to conduct studies on albino rats, right, and birds as well. So consent has to be taken for that, and there is a research ethics committee in each university which gives you permission for carrying your research works. And for human beings, when you're going to collect data from anyone, be it the teachers or the students, it is your moral responsibility to tell them that you are going to use this information for your PhD work, and their identity will not be disclosed to anyone in any case. So example is obtaining informed consent before a clinical study. So especially in pharma, when you are doing some study on human beings, you should obtain their informed consent. Then the next is the core principles of scientific research: honesty and accuracy, objectivity and openness, collegiality and fairness, accountability and stewardship. These we will discuss one by one in detail. First is honesty and accuracy. This I have already told you. It means the truthful reporting of data, methods, and contributions. So, whatever data you are going to collect, whatever method you are going to use to carry out your study of PhD, and contributions, whatever contributions have made by anyone else. For example, if I am working in a lab and one of my colleagues is assisting me, or a lab attendant is helping me out. So whenever we do a thesis, we should acknowledge the contribution of all, and also the contribution of
the previous persons who have worked on the same project. So example is reporting the actual sample size instead of inflating numbers. For example, now अगर मेरा एक्चुअल सैंपल साइज है 500 है ना, देन एंड आई हैव डन वर्क ओनली ऑन 300 एंड इन्फ्लेटिंग मीन्स कि मैं शो करूं कि मैंने तो 600 लोगों पे काम किया है एंड आई फैब्रिकेट द डाटा, दैट इज रॉन्ग. सो वेन एवर यू आर डूइंग स्टडी, आप चाहे छोटा सैंपल साइज ले लो बट डोंट ट्राई टू इन्फ्लेट इट, डोंट ट्राई टू increase the number. And red flag means you should avoid it. राउंडिंग रिजल्ट्स टू लुक बेटर, कि अगर आपको लग रहा है कि ये रिजल्ट तो ऐसे नहीं आना चाहिए था, इसको थोड़ा इस तरह से होना चाहिए था, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर देती हूँ. सो दैट इज wrong. So first is that you should be very honest and accurate, no inflating the data and no rounding off the number to make the results better. Then next is objectivity and openness. So objectivity, I have already explained to you what is objectivity, and minimizing bias. What is biasness? Yes. What do you mean by bias? Anyone? Not giving favors to anyone. Very good. Not giving favors to anyone. Like generally we say कि वो teacher बहुत favoritism करता है. That teacher is बहुत biased है. ये कि biased means bent of mind. कि किसी आपने कोई भी biasness नहीं दिखानी है. And enabling verification means these are my results. This is the data I collected. This is the method I used. If anyone wants to verify, you can verify. And the example of openness is publishing failed or null experiment. Even if some of my experiments has failed, I haven't got any result out of it, then also I publish it. So it will be a food for thought for others also, ki I followed all the steps, this was the result which was expected, but my experiment failed. So this can be a question for discussion, that why did the experiment fail. So that is objectivity and openness. Next is collegiality and fairness. So, respectful collaboration and unbiased peer review. Peer review means the review of your group or your colleagues, right? For example, fair manuscript reviews without पर्सनल और एकेडमिक राइवलरी. अब ये नहीं है कि मेरी किसी के साथ दुश्मनी है ना, एंड आई डोंट वांट टू शेयर द रिव्यूज which that person gave me. So collegiality means companionship and cooperation. So you should give respect to all, even if you are having some personal or academic rivalry. Like, and in PhD, giving proper authorship credit to the lab members. So this I told you earlier also, that if somebody is helping you out with the experiments or with your study, you should give credit to him or her also. Then next is accountability. Right? So accountability means that you take responsibility for research outcomes and mistakes. कि ये नहीं कहना आपने कि ये तो मुझे उसमें लिटरेचर में मिला था, so that is why I did it, or my guide told me to do this, so I did it, otherwise I would not have done it. So you are responsible for whatever research work you are doing. You have to take responsibility for whatever is the outcome and whatever mistake you are doing. So, for example, issuing a correction after discovering an honest error. So, if you have published your work and afterwards you feel that, yes, this is an error I committed, there is no harm that you issue a correction after that, because that will help people out when they are doing their results. So, once you find an error, you can always say that this is the mistake I committed and this is the correct answer. So the key point to take away from this slide is that errors are acceptable in your
research work. Hiding them is not. So if you come across an error, it is better that you tell the error rather than hiding it. Then next is stewardship, right? So stewardship means being responsible for or taking the lead for something, है ना? So for example, if you are getting funds, you should be responsible for using them. Responsible use of funds, whatever data you have, equipment and time. So you have to, you are the leader, you are the steward, you have to take the lead of all these things. And at times, ICSSR and CSIR, they give us projects and they grant money for the research projects. So an example is that using grant money for only approved research activities, whatever they have approved. At times when we get grants, we start working on some other things, so that is ethically wrong. So you should use the money for which the money has been granted. Then next is the importance of scientific conduct. So first also we had discussed that we know that your reputation, the society, everything is at stake. So scientific conduct matters because it protects participants, ensures reproducibility. Like I told you that if you are working scientifically, reproducibility क्या है कि this is my data, this is the method which I used. If anyone wants to repeat it, he or she maybe can repeat it. So if we are following scientific conduct, that can be done. Maintains public trust. If you are doing authentic work, the public will trust you and safeguards your PhD and career. अगर आपने सारा कुछ systematically किया है, systematically report किया है, then it will safeguard your career and your PhD also. Example, fraudulent studies leading to harmful policies. अगर हम कोई भी गलत या false results दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो policies हैं they can be harmful. So that is very important. Then institutional role in research integrity. So wherever you are pursuing your research, it is not only your role which you have to play for research integrity and scientific conduct. The role of the institution where you are pursuing your research is also there. The responsibility is training, oversight, clear procedure, and ethics committee. So the institution should give you training or should make you aware of, of the principles of ethics, what is scientific conduct, and tell you the clear procedures that are to be followed. And besides this, there should be an ethical committee in the institution which should grant you permission for carrying out your work. Example is mandatory ethics training for the PhD students. Then next is, these are the global frameworks. You don't have to do it. I have just mentioned it so that you may be aware. So there are key frameworks for the code of conduct, which include the Singapore Statement, European Code of Conduct, Hong Kong Principles. So the purpose of all these was the to set global standards for responsible research. So research is not a haphazard activity. You might have studied कि जो research है वो एक haphazard activity नहीं है. Systematic set of activities हैं, and different countries have different ethical principles, but overall they are same. And from time to time, different global frameworks have been made to conduct research. Then next is the questionable research practices. So practices that undermine research credibility, कि हमारी research credible है या नहीं है,
उसको क्वेश्चनेबल कौन सी प्रैक्टिसेस करती हैं? सिलेक्टिव रिपोर्टिंग। सिलेक्टिव रिपोर्टिंग क्या होगी? यस, very clear from the words itself. Selective reporting means what? Anyone? Yes. Selective reporting. अभी तो सारा बता भी दिया मैंने, क्या होगी? It's related to your topic. No. Anyone else? मैम Selective reporting. लिटरेचर हाँ जी महेश्वरी। मैम लिटरेचर रिव्यू में जैसे भी आपने बताया कि हम अपनी फेवरेट वो ले लेते हैं जो दूसरे मतलब कि टॉपिक होते हैं जो हमें लगता है कि कॉन्ट्राडिक्ट हो सकते हैं, वो हम अपने आप छोड़ देते हैं। ओके, ठीक है। Anyone else? Anyone Telling, else? ma'am, telling Yes. the only the part of the truth, not the whole truth. वेरी गुड। सो सिलेक्ट रिपोर्टिंग मीन्स किसी चीज को लिखना या बताना। तो सिलेक्टिव रिपोर्टिंग मीन्स जो भी कंटेंट मुझे लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम को सूट कर रहा है या इट इज सपोर्टिंग माय हाइपोथेसिस, आई विल राइट ओनली that and I will not write the other. So this is the questionable research practice. Then poor data management. Whatever data you are having, you are not portraying it in the प्रॉपर मैनर, आप उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टडी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, तो आपने ऊपर कॉलम ही नहीं मेंशन किया कि मेल है या फीमेल है। ये एग्जांपल होगी पुअर डाटा मैनेजमेंट की। और यू आर इन्फ्लेटिंग द नंबर्स कि थोड़े से बच्चों से करवा लिया एंड यू आर रिपोर्टिंग। और एट टाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन वी गिव क्वेश्चनर्स टू पीपल, एट टाइम्स दे आर इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट हमने नहीं कंसिडर करने होते, बट जस्ट टू फिल द नंबर हम सोचते हैं चल बाकी के टिक में अपने आप ही लगा लेता हूँ। तो पुअर डाटा मैनेजमेंट शुड नॉट बी देयर। एंड लास्ट इज हार्किंग, हाइपोथेसिंग आफ्टर रिजल्ट्स आर नोन। यस, इसका क्या मतलब होगा लास्ट का? hypothesizing after results are known, what does this mean? Anyone? Outcome is already known and we are just making a false theory to get those results. Okay, hypothesizing after results are known means, like I told you, that there are certain steps which have to be followed, right? So before you take on or you carry on your result, you have to write down the hypothesis. Like I gave you an example of emotional intelligence, ki I can make a hypothesis ki girls have higher EQ than boys, or boys and girls have the same EQ. So that is a hypothesis that may or may not be truth. पर hypothesis आप कब बनाओगे? Before you start your result. And once you get your results, then we will reject or accept the hypothesis. So this statement means कि पहले मैंने अपनी study कर ली, right? जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस की मैं एग्जांपल ले रही हूँ, और मुझे जो भी रिजल्ट मिला, फॉर एग्जांपल बॉयज एंड गर्ल्स हैव सेम ईक्यू, उसको मैं बाद में फिर हाइपोथेसिस बना देती हूँ कि बॉयज एंड गर्ल्स हैव सेम EQ, and then I say कि my hypothesis is accepting कि मैं research के steps को follow नहीं कर रही हूँ, but first I see the result and based on the result I make the hypothesis. So that is also a questionable research practice. और why they matter? Because they distort the scientific record. तो जो भी आप इस तरह से करोगे, they will distort the scientific record. So these are the key takeaways, that scientific conduct is equal to integrity plus honesty plus ethics. Misconduct, if we are not doing the following the scientific conduct, it harms science and careers. And responsible research strengthens trust and impact. So the message of this is that good science is not just about results, it is about how those results are obtained. So you have a very major role to play. If you read the final message कि अच्छी साइंस वो नहीं है कि मेरा रिजल्ट क्या आया है, अच्छी साइंस क्या है कि वो रिजल्ट्स को मैंने obtain कैसे किया है. So that is scientific conduct. So is it clear to all?
Yes. यस गुड मैम। मॉर्निंग, उठ जाओ, सो तो नहीं गए? Yes, ma'am. Right? Now we will discuss a little about scientific misconduct. I will share the next PPT with you. Just give me 1 minute. Is the screen visible? Hello? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am, it is visible. Okay, ji, okay, okay. So we had discussed about scientific conduct. Now we will discuss about scientific misconduct. So, misconduct refers to violations of standard ethical and scholarly norms in the design, conduct, or reporting of research that undermine scientific integrity. So it is almost the opposite of what we have discussed कि अगर हम violate करते हैं standards, ethical or standard norms के in design, while you are designing your practical, while you are conducting your research, or while you are reporting your research, and it undermines the scientific integrity. So, the basic types of scientific misconduct, which have been defined by the US National Science Foundation, are fabrication, falsification, and plagiarism. So, you might have heard of plagiarism, it is more common. We will discuss all these in detail. So, key point is misconduct involves intentional. Intentional means what? Yes, intentional. What is the meaning? Deliberately. Very good. Deliberately. 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 You are very much aware of it. Misconduct क्या है कि it is not an error. It is not an honest error. So honest error means something which you are not aware of and you have done it by mistake. Sadanand, please put your mic on mute. Hmm. So misconduct means intentional deception. किसी को cheat करना, किसी intention के साथ, and it is not an honest error. So first is fabrication. So what is fabrication? Fabrication is the making up of data, results, or experiments that never occurred and reporting them as real. So fabricate करना means कुछ बनाना, मेकिंग अप ऑफ डाटा, रिजल्ट्स बना रही हूं मैं, एक्सपेरिमेंट्स वो मैंने कभी किया ही नहीं है एंड आई एम राइटिंग देम एज रियल. फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिंग फेक सर्वे रिस्पॉन्डेंट्स कि आई हैव गॉट अ क्वेश्चनियर एंड आई हैव टू कंडक्ट अ सर्वे to find out the results, right? But what do I do? I just tick mark on all the questionnaires myself and I create a data. So these are the fake respondents. Inventing lab measurements, जिसको कि हम ड्राई लैबिंग भी बोलते हैं. लैब मेजरमेंट्स मतलब, in fact I am not doing any lab experiment, I am not doing any lab study, but I know कि these should be the results, so हम अपने आप उसके रिजल्ट बना रहे हैं. So that is also fabrication. Third is citing references that do not exist or do not support the claim. कि मैंने पीछे बिब्लियोग्राफी लिखी है अपने थीसिस की, उसमें मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस डाल दिए हैं एंड मे बी सम ऑफ द रेफरेंसेस आर नॉट आल्सो existing and do not support the claim कि वो I might have written कि they are supporting what my problem is, but actually they are not
supporting it. So that is fabrication or cooking up something. So why it is serious? Because it introduces false knowledge into science. जब आपका वर्क पब्लिश हो जाएगा तो लोग उसको यूज करेंगे, तो आप क्या कर रहे हो? फॉल्स नॉलेज इंट्रोड्यूस कर रहे हो. Misleads future research policy and medical प्रैक्टिस. तो जो भी फ्यूचर रिसर्च है, अगर मैंने कोई रिजल्ट दे दिया है, तो व्हेन पीपल आर साइटिंग माय रेफरेंस इन द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, they will say कि so and so author had these result, and they will also try to move in that direction. और मेडिकल प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि वो एमएमआर की वैक्सीन विड्रॉ कर ली गई और बच्चों को नेक्स्ट ईयर बहुत सारा मीजल्स हो गया. सो if you give false result, it can lead to all these practices, right? Then next is why we fabricate. हम क्यों fabricate करते हैं? What are the situations? Pressure to publish before graduation. Graduation is a general term, right? So आपको pressure है कि आपने thesis submit करने से पहले you have to publish a paper, right? So what do कि you don't have the time and you want to submit your thesis in time, so what you fabricate data so that at least मेरा एक research paper तो निकल आएगा. Then second reason can be experiments that failed repeatedly. I tried to do experiment, but it was failing again and again, and then you feel ki okay, I don't have the patience to repeat it again. So it is better to cook up the results and give it, and you write the false results. Then again, tight deadlines for grants or thesis submission. So these are the results why a person might fabricate. But we should remember that no data is always better than fake data, right? No data, it means that instead of giving fake data, it is better that you don't give any data to anyone. So this is fabrication. Second type of misconduct is falsification. Falsification involves manipulating research materials, processes, images, or data, or selectively omitting results to misinterpret findings. So, falsification means manipulating. Manipulate करना मतलब चेंज करते हो आप. क्या चेंज करते हो? रिसर्च मटेरियल को चेंज करते हो. यू चेंज द प्रोसेस. कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी इमेज चेंज कर देते हो, डाटा चेंज कर देते हो. और सिलेक्टिवली ओमिटिंग मतलब निकालना. आप वो रिजल्ट्स को निकाल देते हो जो आपको सूट नहीं करती हैं, और जो फाइंडिंग है दैट इज misrepresented. For example, removing data points that contradict the hypothesis. So this I told you earlier also, that we might remove the data points which are not in line with the hypothesis. Adjusting image contrast to exaggerate results, कि मेरा बहुत अच्छा काम है, तो जो कोई आपने इमेज ली है उसका कंट्रास्ट आप मैनुअली एडजस्ट करते हो ताकि जो आपके रिजल्ट्स हैं वो एग्जैजरेटेड आए. एंड चेंजिंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स टू अचीव significance. So we have to check the significance of our results also. So at times when we feel that it is showing that the results are not significant, we change the test. So these all refer to falsification. So the key issue over here is that the data exist. डाटा तो आपने इकट्ठा कर लिया, फैब्रिकेट नहीं किया, रियलिटी में इकट्ठा किए, बट दे आर डिस्टॉर्टेड. बट जो एक्चुअल डाटा था उसको आपने सारा चेंज कर दिया. सो दिस इज फॉल्सिफिकेशन. वन वाज फैब्रिकेशन कि मेरे पास डाटा नहीं है, मैंने उसको कुक किया. फॉल्सिफिकेशन क्या है? मेरे पास डाटा है पर मैंने उसको चेंज कर दिया क्योंकि वो मुझे सूट नहीं कर रहा. सो दिस इज अगेन अ साइंटिफिक मिसकंडक्ट. थर्ड टाइप इज प्लेजरिज्म. ये बहुत सुना होगा वर्ड आपने. So plagiarism is using another person's words, ideas, data or results
without proper acknowledgement and presenting them as one's own. तो प्लेजरिज्म क्या है कि किसी और के आइडियाज हैं, किसी और के वर्ड्स हैं, डाटा भी किसी और का है और रिजल्ट्स भी किसी और के हैं, विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट. यू आर नॉट मेंशनिंग the source from where you have taken the data and you are showing कि this is my own work. आप लिख रहे हो कि ये पेपर मेरा है, ये डेफिनेशन मैंने बनाई है, ठीक है. सो दैट इज नोन एज प्लेजरिज्म. सो एग्जाम्पल इज कॉपिंग टेक्स्ट विदाउट साइटेशन. अगर तो हम किसी का कॉपी करके उसका ब्रैकेट में लिख देते हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल कि ये ड्यूई की डेफिनेशन है, सो दैट इज नॉट प्लेजरिज्म. क्लोज पैराफ्रेजिंग विदाउट एट्रीब्यूशन. पैराफ्रेजिंग मीन्स कि मुझे पता है कि अगर मैं किसी के वर्ड्स ऐसे ही उठाकर कॉपी करके लिखूंगी, that will be plagiarism. So what I do, I try to find similar words without changing the meaning, कि उसके साथ मिलते जुलते words लिखकर एक नई definition बना के I will say कि I have created this definition. That is paraphrasing, means writing similar words without attribution. Without attribution means without acknowledging the source and using unpublished ideas from peers और रिव्यूअर्स. तो कई बार क्या होता है कि हम और लोगों का काम देख लेते हैं जो अभी उन्होंने पब्लिश नहीं किया होता, या उनके आइडियाज ले लेते हैं and we show them as our own work. So this is basically cheating plagiarism, when you are not citing the person who has actually done the result. Then next is just one minute. Next is the types of plagiarism. What are the different types of plagiarism? One is text plagiarism, which means copying wording. कि जब आप किसी की wording ही copy करके उसको show करते हो कि this is mine, that is known as text plagiarism. Idea plagiarism, stealing concept, कि किसी और का concept है but I am showing कि this concept is mine, so that is again a plagiarism. Then citation plagiarism, ignoring key prior work. तो इसमें मैं फिर से वही एग्जांपल ले रही हूँ कि जैसे आप किसी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हो, उससे पहले जो भी काम हुआ है ना, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, यू डोंट फील लाइक मेंशनिंग इट और यू इग्नोर certain work done, that is known as citation plagiarism. Then self plagiarism, reusing one's own published work without disclosure. Now you have done PhD, या आपने हो सकता है PG लेवल पे भी रिसर्च वर्क किया हो. So at times what happens ki I give my paper in one journal for publication and then another paper comes and I give the same paper in the other journal also, thinking कि किसी को कौन सा पता चलना है, एक जर्नल साउथ इंडिया का था, एक नॉर्थ का है, एक तो मैंने किसी फॉरेन कंट्री में पब्लिश किया है. दैट इज सेल्फ प्लेगरिज्म कि यू आर यूजिंग योर ओन वर्ड without telling that I have already published it. So your previous thesis chapter is not equal to new publications under disclosed. ठीक है, तो आपके जो thesis chapter है वो कोई new publication नहीं है. You have to tell कि this chapter has already been written in my PhD thesis. So these are the type of plagiarism, चाहे वो words की हो, कंसेप्ट्स की हो, आइडियाज की हो, किसी को साइटेशन आपने नहीं किया है या अपना ही आप काम दिखा रहे हो, दैट इज नोन एज प्लेजरिज्म, राइट. देन नेक्स्ट इज रिडंडेंट पब्लिकेशन. ठीक है, वो प्लेजरिज्म था. नाउ वी कम टू रिडंडेंट पब्लिकेशन. यस, तो रिडंडेंट क्या होता है, वर्ड का मीनिंग? Yes. What do you mean by redundant? We can say it's not related to the topic.
not related or no longer needed for a job, है ना, not necessary or wanted, anything which is not necessary or not wanted, that is known as a redundant. So redundant publication क्या होती है, ये भी scientific misconduct है. Reusing substantial parts of your own published work across multiple papers without proper यथोचित का disclosure. समास क्या होता है? यथा के अनुसार उचित, यथोचित है ना? हाँ जी, अनिल कुमार जी प्लीज म्यूट कीजिए. राइट, तो रिडंडेंट पब्लिकेशन क्या है कि इफ यू आर यूजिंग योर ओन पब्लिश्ड वर्क विदाउट प्रॉपर डिस्क्लोजर. सो व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम? बिकॉज it inflates publication record and distorts the scientific literature. ठीक है, inflate मतलब आप बढ़ा चढ़कर बता रहे हो. हाँ जी, मिस्टर अनिल कुमार. चलो, नेक्स्ट इज डुप्लीकेट पब्लिकेशन. Right, so duplication publication is the publishing of the same results in more than one journal, submitting identical clinical trial results to two journals under different titles. तो आप क्या करते हो कि आप टाइटल चेंज कर देते हो ताकि किसी को पता ना चले, बट उसके अंदर का जो मैटर है वो सेम है. तो आउटकम इज रिट्रैक्शन. रिट्रैक्शन मीन्स विड्रॉइंग ऑफ योर पेपर. मतलब इवन इफ यू हैव पब्लिश्ड अ पेपर, अगर वो आ गया उसके बाद भी जर्नल को राइट होता है कि आपका पेपर जो है वो रिट्रैक्ट कर ले या विड्रॉ कर ले. जर्नल बैन हो सकता है वो जर्नल. एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपके ऊपर और इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी हो सकती है अगर आप डुप्लीकेट पब्लिकेशन कर रहे हैं. देन नेक्स्ट इज ओवरलैपिंग पब्लिकेशन और सलामी स्लाइसिंग. ठीक है, एक मिनट. Dividing one data set into multiple minimal papers to inflate publication count. ठीक है, एक डाटा सेट है, फॉर एग्जांपल मैंने 400 स्टूडेंट्स पे स्टडी की है, राइट, उसको मैं मल्टीपल में डिवाइड कर देती हूँ ताकि जो मेरा पब्लिकेशन का काउंट है वो बहुत ज्यादा लगे. फॉर एग्जाम्पल, पब्लिशिंग स्मॉल वेरिएशन ऑफ द सेम एक्सपेरिमेंट. उस एक्सपेरिमेंट में छोटी छोटी वेरिएशन करके हम दिखा रहे हैं कि वो एक नया एक्सपेरिमेंट मैंने किया है, वो एक न्यू एक्सपेरिमेंट है, राइट. सो इसका ऑल्टरनेटिव या एथिकली आप क्या कर सकते हो कि एक ही पेपर अपना आप पब्लिश करो जो कि बहुत सारा हाई क्वालिटी का हो. सो दिस वाज overlapping publication. Next is plagiarism detection software. So tools that compare submitted text against databases to identify textual similarity. ठीक है, जब आपका PhD का थीसिस खत्म हो जाएगा, आपका प्री सबमिशन होगा, उससे पहले you have to put all your typed material into a plagiarism detection सॉफ्टवेयर, और उसके लिए टूल है टर्निटिन एंड उरकुंड, राइट. तो इसमें क्या है कि अगर आपने अपना मटेरियल कॉपी किया हुआ है कहीं से तो दैट विल बी शोन एज ब्लैक कलर. और अगर आपकी प्लेजरिज्म बहुत ज्यादा आ रही है then your thesis will not be accepted. तो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं starting from introduction, पूरा जो आपका thesis है chapter wise, that has to be passed through a plagiarism detection software. उसकी रिपोर्ट जनरेट होगी, आप थीसिस में लगाओगे तब ही आपका थीसिस जो है वो सबमिट होगा, अदरवाइज योर थीसिस विल बी रिजेक्टेड. सो इंस्टीट्यूशनल मेजर टूल्स टर्निटिन एंड उरकुंड है, और कमर्शियल और ओपन जो आपको पता है जैसे ग्रामरली, उसमें आप डालते हो आपकी ग्रामर वगैरह ठीक हो जाती है. कॉपी लीक्स, क्वीटेक्स्ट एंड स्क्रिबर. सो दीज are the plagiarism detection softwares, right. Then next is interpreting similarity reports.
For example, a report flags 30% similarity due to copied methods and uncited लिटरेचर रिव्यू टेक्स्ट, ठीक है, कि आपने प्लेजरिज्म उसमें डाल दिया है, तो वो कहता है कि ये 30% सिमिलर है, कि इसने मेथड्स भी कॉपी किए हुए हैं और इसकी जो लिटरेचर रिव्यू है वो अनसाइटेड है। लेकिन इसकी लिमिटेशन है, ये जो टूल्स हैं उरकुंड और टर्निटिन है जैसे, इनकी लिमिटेशन क्या है? दे डिटेक्ट सिमिलैरिटी नॉट misconduct. Human judgment is essential. So according to studies it has been shown that no doubt ये जो plagiarism detection tools हैं ये हमें बता देते हैं कि आपने कितना कॉपी किया हुआ है ना, सिमिलैरिटी बताते हैं, पर हम इसको मिसकंडक्ट नहीं कह सकते बिल्कुल जब तक कि उसमें ह्यूमन जजमेंट नहीं होती है। सो ह्यूमन जजमेंट is a must in detecting plagiarism. Then next is image manipulation as a misconduct. So written का मैंने आपको बता दिया है. Then image manipulation means altering scientific images in ways that misinterpret experimental results. For example, splicing images to appear as one experiment, selective brightness enhancement, hiding unwanted data using clone tools. तो ये सारी इमेज मैनिपुलेशंस हैं कि आप क्या करते हो, अपनी जो इमेजेस हैं उनको इकट्ठा कर देते हो ताकि वो लगे कि एक ही एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, या सिलेक्टिव ब्राइटनेस एनहांस कर देते हो ताकि डिफरेंस पता चल सके, या जो डाटा आपने नहीं दिखाना है इमेज में उसको क्लोन टूल्स के साथ, अभी कलरिंग कितने सारे टूल्स होते हैं आपके पास, क्लोन टूल्स के साथ आप अपना डाटा हाइड कर देते हो। और ये कॉमनली ब्लॉट्स जो है और माइक्रोस्कोपी ये उसके साथ रिलेटेड है, फार्मेसी के साथ रिलेटेड जो हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, उसमें कॉमनली हम जो है इमेजेस उनको मैनिपुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट इज द मोटिवेशन बिहाइंड द मिसकंडक्ट। कॉमन फैक्टर क्या है? पब्लिश और पेरिश कल्चर। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ तो पब्लिश कर लो, पेरिश मींस डिस्ट्रॉय होना। ये कल्चर है कि इतनी पब्लिकेशंस चाहिए, आपका इतना स्कोर चाहिए, फिर आप एलिजिबल होगे। तो एक ये भी प्रेशर है कि यहाँ तो पब्लिश करो या पेरिश हो जाओ। ईज ऑफ डिजिटल मैनिपुलेशन, कि आज के जमाने में इजिली हम अपना डाटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। और फाइनेंशियल और रेप्यूटेशनल इंसेंटिव्स, कि कई इंस्टीट्यूशंस ने किया होता है कि अगर इफ यू पब्लिश दीज मैनी नंबर ऑफ पेपर्स you will get incentives, so this can also be a factor. Fabricating results to scare grants और high impact publications, ठीक है, तो आप अपना रिजल्ट क्यों फैब्रिकेट कर रहे हो कि मेरे को अच्छी ग्रांट मिल जाए या मेरे को हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशंस मिल जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो सिंपल है। रिसर्चर्स को, एज रिसर्चर्स यू मस्ट इंश्योर डाटा एक्यूरेसी, अवॉइड डुप्लीकेट सबमिशंस, ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं हमने। मेंटेन रॉ डाटा फॉर वेरिफिकेशन, ये नहीं कहना कि मैंने सबमिट कर दिया तो रॉ डाटा मैंने फेंक दिया, दैट इज रॉन्ग। यू शुड मेंटेन द रॉन्ग डाटा। देन फॉलो एथिकल ऑथरशिप प्रैक्टिसेस, जो भी ऑथरशिप की प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करो। एंड इफ यू आर अनश्योर कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यू शुड आस्क योर सुपरवाइजर और योर ethics office, ठीक है। so these are your roles, this is the responsibility of the institutions and journals. तो institutions should ensure fair इन्वेस्टिगेशन, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेंशन, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, की जहां पे उनको लग रहा है कि बच्चा गलत जा रहा है उसको पहले ही बता दें कि यू आर गोइंग रॉन्ग। And journals generally they also have if you have gone through good journals they have peer review committees, ठीक है। जब आप पेपर देते हो तो एक peer review कमेटी होती है जिसको कि आपका नाम हाइड करके पेपर दिया जाता है कि वो अपने कमेंट्स दे कि ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो जो जर्नल्स हैं उनको भी
करेक्शंस करनी चाहिए, एक्सप्रेशंस ऑफ कंसर्न्स, और ये लिखना चाहिए कि इन केस आपका पेपर गलत मिलता है तो वी विल रिट्रैक्ट योर पेपर, फॉलो कोप गाइडलाइंस, ये हम पढ़ेंगे, ये कमेटी है इसकी एथिकल गाइडलाइंस की प्रिंसिपल्स हैं इसमें, दिस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, एंड प्रोटेक्ट द रिसर्च रिकॉर्ड, राइट. देन नेक्स्ट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट. अगर आप मिसकंडक्ट कर रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपका पेपर रिट्रैक्ट हो सकता है, loss of funding or employment. If you are getting funds from someone, they can withdraw the fund, or an institution can withdraw your services as well. And permanent reputational damage, आपका जो reputation है वो खत्म हो जाएगा. और साइंटिफिक कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर आप मिसकंडक्ट कर रहे हो, मिसगाइडेड रिसर्च एजेंडा, डिलेड प्रोग्रेस एंड पब्लिक misinformation. So these will be the scientific consequences that you will misguide the public in your research result. So why this matters, because ये journals ही हैं. Just concluding, it undermines public trust, wastes resources, कैन कॉज रियल वर्ल्ड हार्म. ठीक है, मिसकंडक्ट को एड्रेस करना, ये मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी पहले वेकफील्ड एमएमआर वैक्सीन की, ठीक है, लेड टू रिड्यूस्ड वैक्सीनेशन रेट्स एंड डिजीज आउटब्रेक्स. तो अगर आप मिसकंडक्ट कर रहे हो उसको एड्रेस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक तो पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो जाता है. अगर आप यही वाली एग्जांपल एमएमआर वाली ले लो, लोगों ने वैक्सीन लगवाना बंद कर दी, पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो गया, और रियल वर्ल्ड हार्म क्या आया कि बच्चों को मीजल्स हो गया, नेक्स्ट ईयर आउटब्रेक हो गया मीजल्स का, और रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट होते हैं बहुत सारे इफ यू डू दिस, राइट. सो वी हैव टू एड्रेस मिसकंडक्ट. देन व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, अगेन जैसे हमने साइंटिफिक कंडक्ट में पढ़ा था, एथिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, डाटा शेयरिंग करो आप, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ डिटेक्शन टूल्स, राइट, डिटेक्शन टूल्स जैसे उरकुंड मैंने बताया आपको, एंड रिसर्च असेसमेंट. डोरा जो है ये एक असेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, जो कि आपका रिसर्च वर्क असेस करती है वहां पे. सो एग्जांपल, इवैल्यूएटिंग रिसर्च क्वालिटी नॉट पब्लिकेशन काउंट. तो जैसे मैंने पहले बताया है कि साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्यों होता है, जब हमारे पे प्रेशर होता है कि ये वाला करना ही करना है, आपने पेपर पब्लिश करना ही करना है, आपकी 10 पब्लिकेशंस होनी चाहिए फिर आपको डिग्री मिलेगी, तो वो गलत है. इसके बजाय हमें करना चाहिए कि आपकी जो रिसर्च क्वालिटी है उसको इवैल्यूएट करना चाहिए, आपके पब्लिक काउंट जो है उसको नहीं करना चाहिए. एंड लास्ट इज की टेकअवेज, FFP मतलब फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड प्लेजरिज्म, they are serious violations. Detection tools assist but do not replace judgment. कि ये नहीं है कि humans का रोल ही खत्म हो गया, अगर conduct protects science, society and your career. अगर आप ethically चलोगे तो आपका जो करियर है, आपका जो सोसाइटी है और साइंस है, that will be protected. ठीक है. So this is from my side. Yes. And now I want, some of you have left, but I want to tell you that you have to give presentations also. Right? So from next week onwards, I will be taking your class, plus we will be having presentations. So I just want to ask you that you want to give individual presentations, or should I make groups and give you a topic and then the group can present? Yes. हाँ जी बोलो. Ma'am, I think individual one is okay. Individual one is okay. So I will do 2 or 3 topics we have already done, and you have the syllabus with you? No, ma'am, not yet. You have not shared. Okay. So I thought it might have been shared. Mother, you have syllabus of other subjects, and the one Sonia ma'am is taking.
Ma'am, only you and Sonia ma'am is taking up the classes, and last week we have an answer class regarding. Okay, तो ठीक है. So, beta, I will share the syllabus with you, and then you can take your topics and you can make a good presentation. And I will be giving just 10 minutes for the presentation. So, you have to put your best in that. You can choose any topic. I will share it tomorrow. I don't have it right now. And then next week, I will take a class, and for half an hour, matlab like 10 minutes each, 3 or 4 students I will be taking every week, so that we can finish in time, and this will help you to prepare for your exams as well. Is it okay? right, ma'am. Right. Right? Okay, ma'am. And the students who Yes, have ma'am. submitted the assignments in time, they will be evaluated, they will get more marks. I'm telling it very clearly because 5th was the last date for submission as compared to the other students. So there, if timelines have been set, they need to be followed. Is it okay? So I will Yes, write, ma'am. I will share the syllabus with you. Plus, I will also, it is, you just let me know whether I should tell when you will be presenting, or it has to be the other way around. Yes. Ma'am, you tell. You just select 4 or 5 students, and we will prepare accordingly. Yeah, that is okay then, right? Then I will write the name of 4 or 5 students, and every week we will have the presentation so that we can wind it up. And the assignments will be helpful for preparing you for the end term exam. अगर आप उसके questions ready कर लेते हो, you will be able to appear for the end term exams. And this week's assignment, I will share the question tomorrow with you. Okay, Right, right? ma'am. Right. चलो, so enjoy your Sunday. मैडम एक And दो चीज पूछना था। हाँ जी बोलिए. मैडम एक तो ये था कि जो प्लेजरिज्म का जो चेक होता है, ये हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जहां पे हम चेक कर सकें, क्योंकि हाँ, मैक्सिमम जो हम देख रहे थे कि ऑल आर वो पेड। पेड है. हाँ, ये ना पेड ही है. जो फ्री वाले हैं, दे जस्ट चेक अप टू 500 वर्ड्स. तो जो ओके मैम। यूनिवर्सिटीज होती है ना, उनके पास उरकुंड या टर्निटिन लाइब्रेरी में होता है, राइट? एंड पीएचडी का जो आपका डेजर्टेशन होगा, योर गाइड विल पुट इट फॉर प्लेजरिज्म चेक इन दैट. अदरवाइज फ्री सॉफ्टवेयर इज नॉट देयर एज सच. ओके मैम। मैडम ठीक दूसरी है. चीज, मैडम ये जो प्रेजेंटेशन आज का जो था पूरा टॉपिक, इसको थोड़ा मैडम शेयर करवा दीजिएगा मैम। हाँ, श्योर. वो आई थिंक दे आर शेयरिंग द लिंक ऑल्सो. जैसे मेरे पास एक पहले आया था, आई थिंक फिलोसफी वाला टॉपिक. यू हैव दैट प्रेजेंटेशन. आई विल शेयर द पीपीटी ऑल्सो. प्लस दिस लेक्चर इज ऑल्सो रिकॉर्डेड, सो आई विल शेयर बोथ ऑफ दीज टुमारो विद यू एंड द ओके प्रीवियस मैम। वन ऑल्सो. मैडम राइट. एक और चीज बोलना था मैम, हाँ जी. वेरी थैंकफुल दैट कि संडे को क्लास का, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत आसान और ठीक पड़ता है। पर हमारे लिए नहीं ना पड़ता संडे या को. मैम अंडरस्टैंड मैम। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अगर प्रेजेंटेशन भी देना है तो संडे को है, तो हमारे हाँ, लिए मतलब इट विल बी ग्रेट अगर आप मैम 1 घंटा थोड़ा सा ओके. मैडम इसमें हमारे लिए ठीक हेल्पफुल हो है. जाता है, बिकॉज आई एम अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो हमारे लिए थोड़ा आसान पड़ता है। ओके. तो यू आर नॉट फ्री ऑन सैटरडेज. मैडम प्रॉब्लम हो जाता है सैटरडे को अगर इवनिंग ओके. में हो तब तो ठीक है, लेकिन Same here, मॉर्निंग ma'am. में प्रॉब्लम हो Even I जाता am a government official, so ओके. always, I mean, I'm sure there would be many students who will prefer it. Ki a little bit of time, if it comes out on Sunday, है। मैम will इट विल बी ग्रेट will मैम। go a big way in helping us all, ma'am. ओके. वी विल ट्राई टू वर्क इट आउट देन, है ना? That would be great, ma'am. That would be really श्योर. great. Actually, it is needed officially. Also, it is needed because on Saturday, when if many of the times we are having working or something like that, so ओके. it is better that if we are having it on Sunday, so that officially also it is correct. ओके. ठीक है. आई Ma'am, it विल is a टॉक high टू request from our office, ma'am. हेलो यस. मैम। मैम, यस. जो आपने असाइनमेंट दी थी ना, वो एक्चुअली ना मेरी कंप्लीट है, बट ना मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ और मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं है, इसीलिए मैं आपको सबमिट नहीं कर पा रही हूँ। वो मेरे लैपटॉप में है असाइनमेंट। मैं अभी कल आ जाऊंगी इंडिया, एंड आते ही मैं आपको सबमिट कर दूंगी असाइनमेंट्स।
आप कहाँ पे घूम रहे हो? मैं वैसे तो मैम अभी मैं ना मुझे बाहर जाना था इंडिया से बाहर, तो फिर मैं वहां चली गई थी, तो मेरी कल की फ्लाइट है वापस की, तो मैं ठीक है, वापस कल आ जाऊंगी, फिर मैं आने के बाद आपको सबमिट कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। बस यही है कि आई जस्ट वांट कि ऑल ऑफ अस शुड स्टिक टू द टाइमलाइन, देन इट इज इजियर फॉर ऑल ऑफ नहीं अस, है ना? सबके मैम, लिए मैं इजी अपनी है। मैं अपनी कंप्लीट कर कर ही गई थी जाने से पहले। मैंने 15 जो आपने 15 तक दी थी ना, 15 दिसंबर तक कंप्लीट करनी थी असाइनमेंट, हम्म, मेरी वो कंप्लीट हो गई थी, बट मैं सबमिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कहाँ करनी है। देन आई वेंट टू सिंगापुर, दैट्स व्हाई आई ठीक है। डिडंट सेंड। हाँ जी मैम। Okay, okay, no issue. So I will share हाँ the things which I've said tomorrow with you, and plus the name of the 5 students who will be presenting. So it will be a Uh, revision for all of you as well, right? Excuse me, ma'am. Ma'am, I have a Yeah, suggestion, which if yeah, it can sure. be considered. Yes, yeah. Ma'am, if a Google Drive link can be made Hmm. wherein all these presentations and Okay, links to the recorded lectures can be put up, which right, can be accessed by every student, only the students. It will right, not be right, open right. for everybody. It can be made in the form of a username or a password or the phone number, whatever it is. That Hmm. will again, over a period Please of done. next two Yeah, and a half to 3 years, it will go a very, very big way in helping yeah. everybody. That is a very good suggestion. I think I'll discuss and we can implement it this way as well. It can be based on the Gmail Yeah, ID of every student, and the sure, student sure. can access it using its Gmail ID, Uh, ma'am. yeah, that's very good, and you can even see the recorded lessons as well if you Yes, miss. ma'am. Yes, That is ma'am. a The good presentations, suggestion. the lectures, the assignments, everything Everything, can be used using that Google Drive link. everything can be used. Yeah, that will be a good way of sharing knowledge. We can work on that. No issues. Thank you, ma'am. I Thank will you. have a discussion tomorrow, and I will just share the message in the group. Thank you, ma'am. मैम ये संडे वाला भी मैडम थोड़ा देखिएगा प्लीज। हाँ, श्योर, श्योर, श्योर। ठीक है, ओके ठीक है, चलो। ओके, थैंक ओके, यू। हैव अ मैडम गुड थैंक अटेंडेंस संडे ऑल ऑफ यू। अटेंडेंस ग्रुप में थैंक डाल दें मैडम। थैंक यू मैम। यस, मैडम अटेंडेंस ग्रुप में डाल दें। हाँ, डाल दो, डाल दीजिए प्लीज। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू।